morning students. Now yesterday we discussed about the mole concept and its various formulas, and the one worksheet will be given on the basis of the number of numericals in basis on the mole concept. Okay, so today we discuss about the next concept of this chapter, percentage composition of element in compounds. So it is defined as, suppose if we take this 100% compounds, one compound is having 100%, so how much percentage of the, suppose in a compounds we have, just for example, carbon dioxide, so they have carbon also and oxygen also. So what is the percentage of carbon present in carbon dioxide, what is the percentage of oxygen present in carbon dioxide? Okay, so that is called percentage composition of elements. Means, so in a compound the amount substance present in 100 parts of the substance, it is defined as the amount of substance present in 100 parts of the substance is called as the percentage composition of elements. Okay, so here percentage composition of elements is equal to the number of atoms of element in compounds into atomic mass upon molar or molecular mass into 100. That is important. Number of atoms of the element in compounds, okay, and into atomic mass upon molecular mass into 100. So just for example, अगर हम determine the percentage of carbon and oxygen in carbon dioxide molecules, meaning clear? So देखिए अभी here first of all percentage of carbon, how many carbon in carbon dioxide? 1 into atomic mass of carbon 12, molar mass of CO2, यहाँ पे हम क्या भी लिख सकते हैं कि number of carbon into atomic mass of carbon upon molar mass of CO2 into 100. So number of carbon 1, atomic mass 12, molar mass 44 into 100. So 12 upon 44 into 100. Now it's calculated. 12 upon 44 into 100. समझ में आ रहा है ना पॉइंट्स? 12 upon 44 into 100. So by using this क्या होगा ये 1200 upon 44, तो you will get this percentage of carbons. Understood? Same thing अभी आपको percentage of oxygen भी मिलेगा. Percentage of oxygen you have to calculate here 1200 upon 44. Any difficulty? It will be like 28 point something आएगा, 28.32 something, it will be like that. And percentage of oxygen
So if you know this one, so you easily calculate. You apply your mathematical brain and calculate it. This is a approximate here quantity, approximates. Okay. Now percentage of oxygen equal to क्या होगा, number of oxygen into atomic mass upon atomic mass of oxygen upon molar mass of CO2 into 100. So number of oxygen is 2, atomic mass 16 upon here 44 into 100. So 32 upon 44 into 100. या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं. सेकंड थिंग, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, बिकॉज उसके अंदर में सिर्फ दो ही तो एलिमेंट्स है, कार्बन और ऑक्सीजन. If you know the carbon का percentage, then 100 minus percentage of carbon, you will get the percentage of oxygen. This is a, but first of all you have to calculate the percentage of one elements in compound. But if the compound having only two elements, that time this concept is applicable. If they having three elements, first you have to calculate the percentage of two elements, then third you easily calculate 100 minus this addition of 2. Okay. Now after that, suppose second one example we take. Calculate percentage of each elements in water molecules. अभी पहले क्या आएगा इसमें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. डायरेक्ट वे ऑफ राइट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू atomic mass of hydrogen upon molar mass of H2O into 100. So number of hydrogen is 2, atomic mass 1 upon 18 into 100. So अभी ये 18 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, ये 5.55 एंड 5.55 इंटू 2 मतलब 11.11 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. देन ऑक्सीजन इजीली निकल जाएगा. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन into atomic mass. Okay, directly write the value. Percentage of oxygen is equal to 1 into 16 upon 18 into 100. So that is 1600 upon 18. You will get the 88.88. Otherwise, second thing is percentage of oxygen is equal to 100 minus percentage of hydrogen. So 100 minus 11.11 is equal to क्या आएगा, 88.89. सॉरी 888 रहेगा, मतलब वो 89 ही हो जाएगा. तो 88.89 परसेंटेज. करेक्ट इट इज. So
दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन. सो कोई भी कंपाउंड का आप आराम से निकाल सकते हैं. इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. So now one example is here again. Calculate the mass percentage of elements in ethanol molecule. You know the formula C2H5OH. Okay, so it having carbon also, hydrogen also and oxygen also. Listen carefully. First of all, percentage of carbon equal to number of carbon into atomic mass upon molar mass. कितना होगा मोलर मास ऑफ इथेनॉल? C2H5OH. So first of all you calculate molar mass of ethanol. 12 into 2, 1 into 6, and how it is 1 into 6? 5 plus 1, 6 hydrogen, and oxygen is 1, so 1 into 16. So 24 plus 6 plus 16 is equal to 46. So molar mass of ethanol is 46 into here 100. So put up this value. Number of carbon 2, atomic mass 12, molar mass ethanol 46 into 100. 24 upon 46 into 100. 24 upon 46 into 100, it will be 52.14%. 52 आ रहा है. Okay. Then same thing for hydrogen. Same thing for hydrogen. Percentage of hydrogen. Directly we have to write how many hydrogen? 6 into 1 upon 46 into 100. So 6 upon 46 into 100. 600 upon 46. 600 upon 46 is equal to 13.30. 13.30. At last, percentage of oxygen. Percentage of oxygen. How many oxygen are there? How many oxygen are there? Only one oxygen. So 1 into 16 upon 46 into 100. So 16 upon 46 into 100. How much it is? It is the 34.73. So when you add all these percentage, carbon, hydrogen and oxygen, you are getting 100%. So this is percentage of hydrogen. This is percentage of carbon, and here percentage of oxygen. This is very simple. If you know the formula, then you easily calculate it. So formula understood it is percentage of particular elements is equal to number of atom in compounds into atomic mass upon molar mass into 100. So that is a very
simple concept. So this is the very simple phenomenon. Understood it is? Any difficulty among that? Okay. Now after that, the next is, in short we discuss first of all the molecular formula and empirical formula. Molecular formula and empirical formula. अभी molecular formula means in a compounds the actual number of atoms present. Actual number. Okay. Molecular formula, it is defined as in a compounds the actual number of atoms present is called as molecular formula. And empirical is a very simplest way. It's not actual, it is the ratio. जैसे जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया. ओके, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला. एंड एम्पिरिकल क्या होगा इसका? हाउ मेनी कार्बन है इसके अंदर में, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा? 6. सो द फॉर्मूला इज, यहाँ पे कार्बन अगर आपने 6 कॉमन निकाल दी इसमें से, तो कार्बन होगा 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन अगेन 1, तो CH2O. CH2O is your empirical formula. C6H12O is the molecular formula. Point clear? Again I repeat, empirical formula means simplest ratio and molecular formula means actual number of atoms. Okay? तो अभी इसका molecular mass अगर निकालेंगे आप, ये 6 क्या है यहाँ पे? कॉमन है, कॉमन 6. जब हमने कॉमन 6 निकाल लिए, तो जब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 6/6 1, 12/6 2 and 6/6 again 1. तो कार्बन इज 1, हाइड्रोजन आर 2, ऑक्सीजन इज 1. अब इसका मॉलिक्यूलर मास हाउ मच इट इज? मॉलिक्यूलर मास 12 into 6 plus 12 into 1 plus 6 into 16, so 24 plus 72 plus 12 plus 96, you will get 180. You will get 180. Understood it is? तो 180 is a molecular mass. Correct? अभी इसका मास क्या आएगा? CH2O का. CH2O का मास कितना आएगा? 1 into 12, 1 into 2 and 1 into 16. Correct? So 12 plus 2 plus 16, it will be a 30. तो ये 30 क्या हो गया? It is empirical formula mass. Empirical formula mass. Empirical formula mass है 30, molecular formula mass आया है 180. So अभी नंबर ऑफ मोल्स ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स और इट इज मॉलिक्यूल बनती है इसको स्मॉल n इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे अभी ये? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. अभी मॉलिक्यूलर मास है 180, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है 30, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6. क्या आएगी? 6. करेक्ट इट इज. तो n की वैल्यू हो गया 6. देन इट इज से दैट
molecular formula is equal to n into empirical formula EF. EF मतलब मैं पूरा लिख देता हूँ, empirical formula. अभी n क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो तो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. अभी n की वैल्यू क्या है 6 एंड एम्पेरिकल फार्मूला क्या था CH2O. क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. C6H12O6. पॉइंट क्लियर हुआ. So this is a very simple phenomenon. In this case, it clearly say that molecular formula means actual number of atoms present in compounds, and empirical formula is a simplest ratio. Simplest मतलब उससे नीचे कहीं उसको डिवाइड नहीं होगा. That's the simplest. Understood it is? And molecular formula is actual number of atoms. So by using formula, you have to calculate the molecular mass. And by after calculating empirical formula, you also calculate empirical formula mass. तो आपको number of molecule मिल जाएगा, molecular mass upon empirical formula mass, correct? Whatever value you are getting n, so n into empirical formula, you are getting the molecular formula. Point समझ में आ रहा है कुछ चीजें का? Point clear हो रहा है? Just मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ. Just second example. Suppose बेंजीन, नाम सुना है बेंजीन C6H6. ये क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, करेक्ट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अभी इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट 78. कैसे है, समझ में आया? नाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला. अभी इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? 6 कॉमन है तो ओनली CH, करेक्ट? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मैथ क्या होगा 13, करेक्ट? तो n की वैल्यू क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट. मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. ओके, तो n विल बी 78 अपॉन 13. हाउ मच इट इज? अगेन इट विल बी 6. देन मॉलिक्यूलर फार्मूला is equal to n into empirical formula. तो n into CH क्या हो जाएगा? C6H6. Is it clear the terms? So this is a very simple phenomenon. तो empirical formula अगर आपको दिया है and the molecular weight is given, so by using this concept you have to determine molecular formula. या molecular formula is given, so you easily identify the empirical formula. But here already इसके ऊपर किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं? empirical formula is given, molecular mass is given, then you identify the molecular formula. तो अगर आपको empirical formula mass दिया है, molecular mass दिया है, तो you identify the value of n and this apply relationship molecular formula is equal to n into empirical formula. Point is clear? अगर आप दूसरा भी एग्जांपल लोगे, सपोज ये C2H6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, करेक्ट? मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 12 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, इट विल बी 30, करेक्ट? नाउ इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला? 2 6 है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा कॉमन? 2, मतलब इट इज CH3. अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास हाउ मच इट इज? 15. तो n की वैल्यू क्या होगी? 30 अपॉन 15 इज इक्वल टू 2. देन मॉलिक्यूलर फार्मूला
again it is equal to N into EF. So 2 into CH3, what you are getting? C2H6. क्या है C2H6? It is ethane. C2H6. Understood? So these are the simple example and its relationship between molecular and empirical formula. Empirical formula दिया है तो molecular formula आप easily निकाल सकते हैं by using a molecular weight. Okay? So this is the very simple phenomena and today we have to stop it. Okay?